Hello students, today we start highway rigid payment. Students, in this lecture we see the introduction part of rigid payment and also see the types of payments and their failures. At last, in this video we see the difference between flexible payment and rigid payment. Students, मैं flexible payments के बारे में मैं in lecture number 15 में बता चुका हूँ, तो आप वो देख सकते हैं। और यहाँ पे हम एट लास्ट में डिफरेंस करेंगे कि क्या क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंस है बिटवीन रिजिड पेमेंट एंड फ्लेक्सिबल पेमेंट्स. So let's start with the introduction part of rigid payments. Rigid payment have sufficient flexible strength to transmit the wheel load stress to the wider area below. A typical cross section of rigid payment compared to flexible payment, rigid payment are placed either directly on the prepaid subgrade or on single layer of granular or stabilized materials. Since there is only one layer of material between the concrete and subgrade, this layer can be called as sub-base or base course. You can see here we road constructed in two layer. First is the concrete layer and second is the base layer, and this one is the subgrade. तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे देखा है जो आपकी जो सब ग्रेड लेयर है उसके बाद हम डायरेक्टली बेस कंस्ट्रक्शन करते हैं एंड देन आफ्टर बेस के ऊपर हम सीधा कंक्रीट लेयर कंस्ट्रक्शन करते हैं, राइट. तो ये आपकी लेयर में प्रोवाइड करते हैं. बेस कोर्स को हम सब बेस कोर्स भी बोल सकते हैं, या तो सब बेस फॉर्म होगा या बेस फॉर्म होगा, राइट. तो ये इन लेयर्स में हमने रिजिड पेमेंट का कंस्ट्रक्शन करा. और जो इन केस ऑफ रिजिड पेमेंट दैट इज वर्क ऑन द फ्लेक्सुअल स्ट्रेंथ ऑफ दिस पेमेंट, ठीक है. दैट लोड ट्रांसफर बेस्ड ऑन द फ्लेक्सुअल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट पेमेंट. हियर स्टूडेंट्स, here theory is applicable to load transfer, that is the plate load theory, right. So you can see here in rigid payment, load is distributed by a slab action and the payment behave like a elastic plate resisting on viscous medium. Students, I already told you the load transfer by the rigid payment by the plate action, or you can say by slab actions, right. So rigid payment are constructed by Portland cement concrete and should be analyzed by plate theory instead of layer theory. देखो स्टूडेंट्स, हमने लेक्चर नंबर 15 में क्या पढ़ा था, फ्लेक्सुअल पेमेंट पढ़ा था. उसमें जो लोड ट्रांसफर फिनोमेना होता था दैट इज द बेस्ड ऑन द लेयर थ्योरी, बट इन दिस केस दैट इज बेस्ड ऑन द प्लास्टिक थ्योरी, या यू कैन से स्लैब एक्शंस, राइट. प्लास्टिक थ्योरी से मतलब ये है कि जो लोड ट्रांसफर होगा स्लैब टू स्लैब लोड ट्रांसफर होगा, नॉट ए ग्रेन टू ग्रेन एज ए फ्लेक्सिबल पेमेंट, राइट. So plate theory is simplified version of layer theory, that is assume the concrete slab as a medium thick plate which is plain before loading and to remain plain after loading. Bending of the slab due to wheel load and temperature variation and the resulting tensile and flexural stress, right. So here we see the slab which under the wheel load, which getting a stress of wheel load stress, and also due to the temperature the slab taking a variation between a tensile stress and also a flexural stress. Flexural stress means students bending stress. जनरली आपके जॉइंट्स वाले पोर्शंस पे आएंगे ये स्ट्रेस, जो जॉइंट्स होंगे आपके या एज होगा तो ये स्ट्रेस आपको वहां पे मिलेंगे. Now we see the types of rigid payments. Rigid payments can be classified into four types. First is jointed plain concrete payment. जॉइंटेड प्लेन कंक्रीट पेमेंट. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ जो जॉइंट प्रोवाइड किए गए हैं इस पेमेंट पे, यदि हम देखें इस पेमेंट को जॉइंटेड प्लेन कंक्रीट पेमेंट को, तो इसमें जो जॉइंट्स हैं और जो जॉइंट्स
बिटवीन टू जॉइंट्स जो आपका स्ट्रेस ट्रांसफर होगा, तो वो जो एग्रीगेट इंटरलॉकिंग है उसके कारण आपका स्ट्रेस ट्रांसफर होगा, लोड ट्रांसफर होगा, राइट। वो जो नॉर्मली इसकी जो जॉइंट स्पेसिंग है वो आपकी 5 to 10 mm रहेगी। Second is jointed reinforcement concrete pavement. Students, here we provide the steels in joints to transfer the load, right? So reinforcement help to keep the slab together even after the cracks. So that is the jointed reinforcement concrete pavement. Now we see the continuous reinforcement concrete pavement. In case of continuous reinforced concrete pavement, complete elimination of joints are achieved by the reinforcement, right? Here we complete elimination of joint are achieved by the reinforcement. So students, in this case, the all through the beam, all through the slab, we provide the reinforcement. ठीक है, तो continuously आप reinforcement provide करते हैं एज ए जो reinforcement जैसे हम स्लैब में reinforcement बांधते हैं, सेम एज इट इज इसमें से लिए आपका reinforcement provide करते हैं, right? Next we see the pre-stress concrete pavement. प्री स्ट्रेस कंक्रीट पेमेंट का मींस ये है स्टूडेंट्स, आप पहले से ही प्री कास्टिंग या प्री कास्टिंग जो भी प्री स्ट्रेस ब्लॉक ऑफ कंक्रीट या स्लैब आप लाके जो आपकी हाईवे पेमेंट है उस पे पुट कर दोगे, राइट? या आप जो ब्लॉक्स हैं कंक्रीट ब्लॉक, प्री स्ट्रेस कंक्रीट ब्लॉक, उनसे हम कंक्रीट पेमेंट बनाएंगे, आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये भी आज के टाइम पे अच्छा मेथड है यदि हमें क्विक प्रोसेस करना है जहाँ पे हमारा ज्यादा ट्रैफिक ऑफ वॉल्यूम है, राइट? तो हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं, इस स्लैब का यूज कर सकते हैं, प्री स्ट्रेस कंक्रीट पेमेंट स्लैब, जहाँ पे हमें ट्रैफिक जल्दी ओपन करना है, ठीक है। तो हमें फोर्थ जो भी डिजाइन है रिजिड पेमेंट का वो कर सकते हैं। Now we see the failure of criteria of rigid payment. स्टूडेंट्स देखिए जो रिजिड पेमेंट्स हैं, आप मैंने आपको बताया पहले कि जो रिजिड पेमेंट में आपकी टेंसाइल स्ट्रेस और फ्लेक्सुरल स्ट्रेस दोनों आएंगी। देखिए कंक्रीट हमें पता है कि कंप्रेशन में आपका स्ट्रॉन्ग होता है, इन केस ऑफ टेंशन विल बी वीक। तो जो फेलियर होगा वो आपका फेलियर होगा इन टेंशन में ही कंक्रीट का फेलियर होगा, ना कि आपका कंप्रेशन में। तो जो आपकी टेंसाइल स्ट्रेस आएगी कंक्रीट में, so that will be occurs at the edge and the joint locations, right? So maximum cracks will be occurs in the joints and the edge. So we taking care of the joints and also edge. So here we see that traditional fatigue cracking has been considered as the major or only criteria for rigid pavement design. The allowable number of load repetition to cause fatigue cracking depend on stress ratio between flexure tensile stress and concrete modulus of rupture of lead pumping is identified as an important failure criteria. देखिए नंबर ऑफ कंटिन्यूअसली हम लोड प्रोवाइड करो सो दैट इज कोजिंग ऑफ फैटिक। सो फैटिक के कारण जो क्रैकिंग आएगी इन कंक्रीट पेमेंट में, that is the important part, or that also due to the cracking the inject of the pumping of soil through the cracking, so that is a damage of soil. So here we see pumping is the ejection of soil slurry through the joints and cracks of cement concrete pavement caused during the downward movement of slab under the heavy wheel load. Other major types of diastresis in rigid pavement include faulting, spalling and deterioration, right? देखिए फैटिक अगर आपकी टेंसिल स्ट्रेस डेवलप होगी, ठीक है, तो उसके कारण आपका जो भी क्रैक्स डेवलप होगा, और अब क्रैक्स डेवलप होने के बाद इन रेनी सीजन वी सी दैट थ्रू द subgrade the soil will be in form of slurry and that come injected through the cracks and joints due to the heavy load pushing the concrete slab downwards and the slurry of soil injected through the cracks and joints of pavements. So that's slurry is weakened
weak to the weak part or weak to the concrete part, and also a many fatigues, faulting or spelling and deteriorations occur on surface of pavement. So that will be uh, chance of failures, right, of rigid payments. Here we see the difference between flexible payment and rigid payment. Flexible payments and rigid payments, students, as we study in lecture number 15, and in this lecture we see the flexible payment and rigid payments. So their design criteria is different, totally different, and they come in actions between various type of loading, right? So if we see the first point about the flexible payment, it consists of a series of layers with a highest quality material at or near the surface of pavement. जैसे कि हमें पता है स्टूडेंट, जो फ्लेक्सिबल पेमेंट वो होता है, उसमें क्या होता है, जो लोड ट्रांसफर होता है आपका लेयर टू लेयर होता है, और जो लोड आपका मैक्सिमम लोड कैरी करता है दैट इज कैरी बाय द अपर लेयर ऑफ द पेमेंट. तो आपका जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल है दैट विल बी गिवन बेटर इन ए अपर सरफेस लेयर, राइट. In case of rigid pavement, it consists of one layer Portland cement concrete slab or relatively high flexural strength. और जो ये इसमें क्या होता है, हाई फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ की हम पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट स्लैब कंस्ट्रक्शन करते हैं. इन दिस केस द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ इज लो, राइट. It reflects the deformation of subgrade and subsequent layer on the surface. Right. In case of rigid pavement, it is able to bridge uh, over localized failure and area of inadequate support. Third point we see, its stability depends upon the aggregate, interlock, particle friction, and cohesion. In case of rigid pavement, its structural strength is provided by the pavement slab itself by its beam actions, right? Fourth point, pavement design is greatly influenced by the subgrade strength. Flexural strength of concrete is a major factor for design. It functions by a way of load distribution through the component layer. It distributes load over a wide area of subgrade because of its rigidity and high modulus of elasticity. If we see the sixth point, temperature variation due to change in atmospheric condition do not produce stress in flexible pavement. Here, temperature change induce heavy stresses in rigid pavements. तो स्टूडेंट, फ्लेक्सिबल पेमेंट में आपका टेम्परेचर इफेक्ट इतना नहीं होता जितना कि आपका रिजिड पेमेंट में होता है. एंड सेवंथ पॉइंट इज, flexible pavement have self-healing property due to heavier wheel load are recoverable due to some extent. In case of rigid pavement, any excessive deformation occurring due to heavier wheel load are not recoverable. Is that settlement are permanent. रिजिड पेमेंट में क्या होता है, आपकी सेटलमेंट आपकी परमानेंट, जो डिफॉर्मेशन हुआ दैट इज अ परमानेंट, बट इन दिस केस वो रिकवरेबल भी है फ्लेक्सिबल पेमेंट के केस में. सो स्टूडेंट्स, हियर वी सी द seventh point of difference between flexible payment and rigid payment. So these 7 points are important, so you learn about these points. Now we see the important points of this slide. First is rigid payment. Students, rigid payment, in case of rigid payment, the flexible strength is very high. And in this case, in this payment, the load transfer by the slab action, or you can say this follow the plate theory. Here we see the top layer of the payment is called cement concrete payment, made with the cement concrete payment. And below that, the base course is provided. That will be directly over the subgrade layer. Here we see the types of rigid pavement on basis of joint construction.
Here we divided the three parts, and last one is the pre-stress concrete payment. So student, as per our site conditions or as per requirement of projects, we use these payments. And at last we see the failure criteria of rigid payment. The student failure criteria of rigid payment is the due to the temperature difference and heavy wheel load actions, the rigid payment carry tensile strength and flexural strength, right? So due to this, our payment is go to the cracks near to the joints and edge. So through the edge, the slurry of the soil injected into the pavement, and pavement causes of spelling of aggregates and deteriorations occurs on the surface. So that kind of failure occurs on rigid pavements. Here we see the 7 points of uh, differences between flexible pavement and rigid pavement. So you can see here the important point is the flexible pavement is having the high flexure value and the low flexure value, and rigid payment have a high flexure strength, right? So students, you can write all difference. Thank you students, take care.